Hi guys, good evening, namaskar. My name is Vaibhav and welcome to this podcast. तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी एंड इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास हैं स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर ज्ञानेश जैन। प्रोफेसर ज्ञानेश जैन के अगर बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, ही इज़ एन आईआईएम बैंगलोर एल्यूमिनस एंड डेटा साइंस की फील्ड में बहुत ही लंबे टाइम से हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है। हालांकि मैंने भी अभी डेटा साइंस की फील्ड में जंप किया है, बट मैं अगर कुछ बोलूँगा आप लोग मानोगे नहीं उस चीज़ को, बिकॉज मैं अभी बहुत नया हूँ। सो दैट्स वाई वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट। अलॉन्ग विद दिस वी हैव आवर को होस्ट आशीष चौहान, जो कि ऑल्सो डेटा साइंस की फील्ड से ही हैं एंड मेरे जैसे ही थोड़े से नेव हैं। सो आशीष, ओवर टू यू। So, hey guys, welcome everyone. So, this is our second episode in the podcast series. And इस पॉडकास्ट की अपनी एक कहानी है और वो कहानी कुछ ऐसी है कि वैभव और मैं तो डेटा साइंस के इस दरिया में कूदने को आए ही थे। पर होता क्या था, एवरी टाइम आई वाज वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो, सडनली एक ऐड आता था, डू यू वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, द 21st सेंचुरी सेक्सिएस्ट जॉब एवरीवेयर। मैं गाना डॉट कॉम पे गाने सुन रहा हूँ, देयर ऑल्सो। So every time this question kept popping up, and we really wanted to know, is data science really the sexiest job of 21st century? And who better to tell us than Professor Gyanesh Jain? So sir, please हमें बताइए, is is it a myth or is it really true कि 21st century की sexiest job data science है? इनफैक्ट इफ वी सी व्हेन जब आपके पास ये ऐड आ रहा है ना, वो भी एक डेटा साइंटिस्ट ही कोई पीछे बैठ के दे आर पुशिंग, लाइक दे आर नॉट पुशिंग इन दैट सेंस, Right. there are algorithms in place because I guess you guys are data scientists and then you're working professionals. So you're now and there you're searching for solutions on it, and then those things are getting captured and you're getting ads, and that's the beauty of data science. When we say from the job perspective, prospects, it's a very it's a lucrative job. I would agree to that. But then, like as in every job, what would happen? There would be a plateau. Like when you see when Java developers were there, then Java was very new. New Java developers would give like a very good amount of cash and fringe benefits in salaries and all those things. But then there came a time that that technology plateaued, and then we are now seeing average salaries being. And data science is also, when we see the data science, still packages are very high, but like if I look at like from 10 years from now, it would be at that stage. But then again, talent, if plateau is hitting, people think that in a technology where plateau is hitting, that technology is not good to go ahead. I guess that opposite of that is true. Like you are a good Java developer, you'll still earn more today. सर, सर ये तो, So but so सर the ये तो idea is like yes, Yeah. it is a good opportunity to be a data scientist, but then you have to be very proficient in your field. So like when you say na that we get these ads, many a times these ads are saying like, okay, we'll make, like, take this 40-hour course, they take this Right. weekend course. I see YouTube links in like be a data scientist in 12 hours. Like there will be Yeah. 12-hour marathon sort of a एक दिन में YouTube डेटा video, and then साइंटिस्ट I बन will be a जाइए. data scientist. So that is not going to be possible. यस, राइट Because राइट। data science is a very, like, there are umbrellas under data scientists that have to be like taken care of. So Right. that's my take. When we say it's the sexiest job, it can be, but like I don't think you say that it is the sexiest per se for a person who is very inclined towards medicine or towards human body. For him, being a doctor could be the sexiest job. Right. Yeah, And then right, right. money comes from that passion. Money doesn't Mhm. come from that. No, no, no. Data science is a very good field. Go ahead and take data science. Money doesn't come from that. Money comes from passion. Right. So I guess I'll focus on the part that yes, it is a field, definitely a very prospective field. But yeah, still the passion has to be there, and the grit to work hard in this, that has to go along. एंड आई थिंक सर, मतलब ये तो एक जनरल बात हो गई। इनफैक्ट जस्ट नॉट इन द डेटा साइंस फील्ड, किसी भी फील्ड में जाओ, इफ यू हैव दैट ग्रिट
एंड यू कंटिन्यूअली डू दैट, तो Hmm. डेफिनेटली सक्सेस जो है एक पर्टिकुलर हाँ, फील्ड में मिलती है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली डेटा साइंस की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि ल्यूक्रेटिव है, पैसा थोड़ा बेटर है बाकी चीज़ों से हाँ, अगर मतलब देखा जाए। नॉर्मल से तो ज्यादा है। हाँ। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा मेरे सारे व्यूअर्स को, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे So, लोग हैं जो like in data science, what is happening that you like why it's the sexiest job when we say na when like it's like from 2012 Harvard हम्म, business review. So राइट like they're saying the head start is great. राइट राइट करेक्ट। Like when we are talking of another some jobs like being say very like I discussed medicine, so like a plain MBBS or a plain BTech, or हम्म we'll just say a plain like a management graduate. हम्म The head start is great. Like in data science, the head start is great. You'll be like at least one and a half times. Head start is one and a half time apart from the other field. That I could agree. An राइट average I'm saying. In many हम्म cases, you But could get up to 4 5 times as well as a head start. But then the idea is that what you'll expect and then what will match. Because when हम्म people hire you as a data scientist, there are organizational aspects, and this when you say this is paying well, then the organizational what will say the organizational expectations are way too much. जहाँ तक मैं So समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा। that also you have to look. So you have to put extra grit into the field as well. राइट। बट जहाँ तक मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, ऐसा मतलब अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों को देखते हैं, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड Hmm. कि अगर कोई स्टूडेंट है एक आईटी फील्ड से, या कोई आईटी प्रोफेशनल है ऑलरेडी 2-3 साल एक्सपीरियंसड है, एंड दे वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ डेटा Hmm. साइंस, तो एक क्या माइंड Hmm. मेकअप करे एक आईटी प्रोफेशनल जो थोड़े से यंगर जनरेशन आ रही है, नए फ्रेशर्स हैं, कितनी कितनी एवरेज सैलरी क्या उनके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ आई कैन आस्क फॉर दिस मच मनी। नो डाउट यू हैव टोल्ड कि हाँ अराउंड 40-50% ज़्यादा है नॉर्मल आईटी जॉब से, बट दे मस्ट बी सम दे मस्ट बी सम It, बॉल पार्क it फिगर अराउंड depends. इट। हाँ, तो सी वैभव लाइक इट डिपेंड्स कि आप किस रोल पे आप देख रहे हो अपने आप को. इफ यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ एज अ डेटा साइंटिस्ट, सो आई गेस नॉर्मल इंडस्ट्री में फ्रेशर पे the range is between 8 to 16. Sometimes in companies it could go 18 as well, 18, 20, 20 to be the max. I'm talking about fan. Uh, where if you're looking at yourself as BA, business analyst, business intelligence, you're looking at somewhere between 5 to 8. ओके। And then if you're looking for data analysts, then data analyst you are looking at 7 to 10 max data analyst. Like there are different features to it. And when you're looking at data visualization experts, will say around then same. And visualization again, it becomes an art. So like they'll see what you are right. doing. But from a fresher perspective, maximum you could get up to 15, and then starts at 5, 5.5. The visualization has a But very large range. yeah. So, sir, that was about the expectation that a fresher could have. But मुझे ये पूछना है, right? But मुझे ये जानना है कि, as you said, sir, कि someone from a different background is also getting interested towards data science. So, Hmm. what is that one thing that drove you towards data science? Because जितना मुझे पता है, perhaps आपका जो background है, that was not really from the IT Hmm. perspective. So, Correct. आप क्यों आए इसमें? How did you come into it? Actually, before the podcast also we were discussing na कि I did not Yeah. know that I came into data science. That is sheer accident. Like, see what happened when I did my MBA. Then there was this fact that I was very passionate about data. No, so I did not come from the buzzword like when we said it's data Right. scientist. So see, I never were into this fact. But then when I like had gone for my doctoral, then what happened? Like I was very interested in data, how it moves, and like how stock markets are working. From there, what happened? I got into this stock market predictions, time series analysis, econometrics. I studied a lot, I guess. At that time, in 6 months, I studied around 2 to 3 books there. Then what happened? Then I got to know what's the theory.
Now, what the problem was in management schools, I guess still this is the problem, or with upcoming of R now, this problem I see is a bit less, but at my time it was very high. The problem was we are having very specialized softwares, either SPSS or EViews. And then what would happen? There were like predetermined techniques, Garch, Arch, and then you go to eViews, click on Arch, Arch results would be there. You click Garch, Garch results would be there. And as a doctoral candidate, I'll have to like think like what more I could do to the predictions, because like I was working on a fairly new segment, that's the commodity segment. The models were not getting very efficient, and then I thought that I need to learn some sort of a programming language to model my thoughts, like what is my model, and I want to model my thoughts. And that's where I started off with R, and eventually then I thought that R was getting stuck when, because R is having two problems with loops, as we discussed, I guess. Right, right. So then I thought कि ठीक है, let's see Python. तो वैसे ही complete हुआ structure. So I specialized in, like, when we say data scientist, so data scientist is basically unstructured plus structured data. मेरा specialization structured data से हुआ. Unstructured data I am still learning now. Now I see it's the need of the hour कि unstructured data पता होना चाहिए. Right, So right. I am in the process. थोड़ा सा पहले से पता था sentiment analysis and all, like stocks पे कैसे करते हैं. But in general terms, तो वो data science, any job is a learning process. So उस time की बात अगर करें तो I was never into, like, when we say like data science I was not that. राइट. Right, तो right. पता नहीं था, लेकिन उतर आए इस फील्ड में और अब आप कमाल कर रहे हैं, बिकॉज यू बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल इनटू डेटा साइंस एज ऑफ नाउ. एंड ऑन दैट नोट मैं जानना चाहूंगा कि वैभव इज आल्सो हैज स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस. तो वैभव, आपकी क्या स्टोरी है? व्हाट ड्रोव यू इनटू डेटा साइंस? मतलब आपको क्या I guess you guys would have much more good stories, because you guys had that inspiration to come to data science. You came up या with the aspiration, like data science में जाना. यस यस. सो Right. अगर आप वैभव बताएंगे अपनी स्टोरी तो वी वुड बी इंटरेस्टिंग. या एक्चुअली मेरी स्टोरी ये है कि मैंने इंजीनियरिंग में तो कभी आईटी पढ़ी नहीं थी, बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो वहाँ तो आईटी का कुछ मतलब, मैंने एक लाइन भी कोड लिखना नहीं आता था मुझे. बट आई वुड रियली एक्सटेंड माई थैंक्स टू माई फर्स्ट जॉब विच वॉज एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पर मैंने आईटी का थोड़ा बहुत कुछ सीखा. एंड इन माई प्रोजेक्ट दे वर वेरी सपोर्टिव पीपल. धीरे धीरे जैसे मैं काम करने लगा, आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन डेटा. आई वॉज वर्किंग ऑन डेटा मॉडलिंग विद एसक्यूएल लैंग्वेज. तो राइट वहाँ से मेरा इंटरेस्ट ना बहुत बन गया इसमें. एंड देन देयर वाज इनिशिएटिव फ्रॉम द कंपनी कि हाँ भाई ये ट्रेनिंग्स करो. एंड देयर आई सॉ पाइथन एंड सम स्टफ अबाउट स्टैटिस्टिक्स. बिग डेटा के बारे में मैंने थोड़ा सा सुना कि हाँ भाई ये बूमिंग है, यहाँ जाना चाहिए. एंड राइट. एंड दैट वाज हाउ आई ट्रांजिशनड इनटू द डेटा साइंस फ्रॉम जस्ट अ डेटा मॉडलिंग गाय. तो ओके. ये मेरी स्टोरी थी. बट आई थिंक राइट. आशीष, आपकी स्टोरी मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. I don't know about interesting, but एक different route जरूर था, because I was into retail banking. तो I mean retail banking में when I got into it, मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई कि अरे बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं. पर जब मैं बैंक में काम कर रहा था तो मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी, और अगर छुट्टी मिल भी जाए तो अगले दिन ऐसा महसूस करा दिया जाता था कि कुछ पाप कर दिया है मैंने. तो मैं फेड अप हो चुका था. आई जस्ट वांटेड टू क्विट बैंकिंग एंड गेट इनटू समथिंग. सो एज आई वाज टेलिंग इन द स्टार्ट, मैं यूट्यूब काफी वो करता रहता था, ब्राउज ये वो. तो उसमें बार बार डेटा साइंस कोर्स. मैंने कहा यार, अगर इसको इतना मुझ पर भरोसा है, इतना ऐड दिखा रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ खुद पे भरोसा. तो and then I found out कि it's a well-paying job. Now that money was a big factor for me, and it really मतलब उसका मोटिवेशन आया मेरे को कि यार पैसे के लिए कर सकता हूँ, मैं मेहनत तो कर सकता हूँ. So then I got into the institute, and मेरे गुरुजी यहाँ पर हैं, ज्ञानेश सर हैं. Everything that I know about data science is from him. But there is an interesting story. So in the first class itself, so sir introduced Anaconda Navigator and Jupyter Notebook and Python. Now I had no idea what these things are.
So the moment sir said that we are going to use Python, तो मैं मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा था, and I was like, भाई हम लोग Python यूज करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे मतलब क्या AI है, ये डेटा साइंस की क्लास है, किस चीज की क्लास है ये? And then next thing was download Anaconda, and I was like, dude, are we getting into snake family or what it is? So that was it, but it's a really interesting field. One thing that I definitely can say is, from retail banking to a guy who comes into data science, data was the common factor here. So that was my story. Oh, kudos to Ashish. You made it there. Still trying. I'm still in the work in No, progress. yeah, any field we still try. Yeah. So I would like to know more about this from Professor Gyanesh. Sir, like we already know that we discussed that this is the sexiest job of 21st century. Right. I would like you to tell all our viewers and to both of us as well that what would be that advice from you for the people who want to get into this particular field if they want to start it from the scratch. Like we had some of our path, we got into a course and we did it and we got into this field, but there are millions of people out there in India where we know that IT industry gives jobs to too much of people. So आपकी क्या ऐसी एक एडवाइस होगी उन लोगों को कि क्या करना चाहिए जहाँ पर यूडमी कोर्सेरा हर जगह से यूट्यूब एड से आपको दे रहे हैं कि आप 40 घंटे में डेटा साइंटिस्ट बन जाइए एंड देयर आर a lot of programs and a lot of marketing of all these programs going on. तो क्या करना चाहिए यहाँ से स्टार्ट करने के लिए? See, first of all, like you have to look at from a perspective कि आप ये देखें कि what you are interested in. Because when you'll take a course, data science जब भी आप लेंगे तो मतलब there's a very blanket sort of a course कि जो Udemy Coursera पे होता है. Right, right, अ, correct. कि जैसे कि पाइथन है, अब जैसे कोई लैंग्वेज है, we'll code along, you code, we code, you code, we code, and the idea is that when this happens ना, you code, we code, you code, we code ना, वो क्या होता है ना कि जब खुद से कोड करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है. This is a Right. very painful process. Right. And see, that is why I prefer कि जिसको भी जैसे कोर्सेज लेने, अब तो ऑनलाइन हो गए काफी चीजें, Right. like take courses from an institutional backend. Like the Coursera Udemy is good for people like who are very good, like who are at a place, who are not at point zero, point 5. जैसे आप अब जैसे you Right. guys are Yes. Right. Right. आशीष मतलब like आपका जो बैच है, अब यहाँ से आप अगर Coursera Udemy लेंगे तो that would be beneficial for you. Like think 2 years back, if you would be taking Coursera and Udemy, you would not be getting that much thing. वो एक बहुत specific course बनाया है and Hmm. वो deliver कर रहे हैं. The Right. reason है और उनको भी economies of scale चाहिए, मतलब और course, and you get an idea like we discuss things in the classroom, correct? Correct. जो Right. टॉपिक्स हम लोग क्लासरूम में like with the mathematics that we think discussed, अगर वही कोर्स कंटेंट और like with that toughness करे ना, तो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रिटेंशन. Right. हाँ, right. Definitely. The moment मैं उनको थोड़ा सा like I'll take them out of their comfort zone, they'll say no, this doesn't seem right for me. हाँ, और वो वहां पे प्रॉफिट इंसेंटिव चला गया. हाँ, कोर्सेरा की कोर्स की रेटिंग गिर जाती है. हाँ, तो कमिट करना है, मतलब जो शुरू कर रहे हैं पॉइंट जीरो से, they have to commit. And they have to Right. think of that fact कि there's a comfort zone, I have to get out of it, and that's अगर कोई जॉब आपको हेड स्टार्ट दे रहा है तो there must be something for it. Right. Hmm. Like we say ना कि if it was easy, everyone should be doing it. Right. Right. So if data science is not done by everyone, so like take Right. that for a fact that it's not easy. Right. Yes, yes. So, sir, on that note, I mean, एक interview था, I saw an interview of Sundar Pichai when he visited India few years back. So, crowd में से उनसे किसी ने पूछा था that I want to get into Google. What is the best route I should take? And then Sundar Pichai asked him, so what's your background? And he said, I'm studying mathematics. So he said that's the best route. You can surely get into Google. And उसी तरह से एक meme है which we all would have seen on data science कि data science को उठा के देखा तो क्या निकला? Statistics. Right. So
could you comment on that? Like, is it really all about वाला movie जो है कि like who wants to be a data scientist, everyone raises hand, and who like get in this line, and who wants to study mathematics, no one is in that line. yeah, Yeah, right, right, right. right. So 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 yeah, how not necessarily important is, yeah, mathematics is not just data science. Like we are looking for when you say data scientist, now that's a very yeah, different term. Data okay, scientist, data analyst. We were discussing earlier, no? Data right. scientist, data analyst, statistician. Hmm. For that matter, data storyteller, like for visualization expert. They Yeah, all have their different roles. Mhm. The role of the data scientist becomes very difficult. Why? Or if it is difficult, that is why they are paying money. That's for sure. right, So Right. for data analysts or for like data storytellers or for statisticians, what happens? There are organizational silos for data, correct? तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट्स में सब सेपरेट डेटा स्टोर्ड होगा और उस डेटा पे जैसे डेटा एनालिस्ट अपना कुछ डेटा एनालिस्ट का बेसिक जॉब क्या रहेगा लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज कि उसी डेटा को जो डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एक डिपार्टमेंटल साइलो में है उसको हमने एसेस किया उससे जो Mhm. भी इनसाइट्स निकलते हैं वो डिसीजन मेकर तक पहुंचा देते हैं बेसिक डेटा एनालिस्ट लाइक दैट हैज Right. बी क्विक मतलब yeah. बीइंग डेटा एनालिस्ट यू कैन नॉट से आई टेक 2 months टाइम टू तो कहेंगे ठीक है जाइए कोई भी नहीं हो पाएगा आपसे and being a statistician is like to aid data analyst कि like क्या नए नए टेक्निक्स हम बैकएंड पे टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं उस डेटा पे क्या क्या रन कर सकते हैं वो स्टैटिस्टिशियन एक काम हो गया स्टोरी टेलर है कि लाइक लाइक जब बहुत टॉप लेवल मैनेजमेंट पे गए वो लाइक दे Right. हैव 2 minutes 3 minutes तो कहेंगे कि स्टोरी डेटा स्टोरी बना दो वी वांट टू हैव अ डेक एक प्रेजेंटेशन करते हैं जो डिसीजन लेना तुरंत नहीं खत्म कर देना खत्म. Right. Right. पॉइंट है डेटा साइंटिस्ट में पॉइंट क्या जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन साइलोज इंटीग्रेट करने का पूरा काम डेटा साइंटिस्ट को मिल गया Right. कौन सा वेरिएबल इस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन से मार्केटिंग में लिंक हो रहा है कौन सा मार्केटिंग से लेके मान के चलो तुम पोस्ट सेल्स में लिंक हो रहा है ना you're collecting all the days connecting the dots no that process takes time Right. Hmm. and the Right. Right. reason is many organizations like you mentioned Google so FANG when we say Facebook Apple and this uh, Amazon. Netflix Right. Amazon and Google Right. these companies are like data driven companies correct many companies don't have that organizational vision and then that's not my words if you like I was reading on Harvard journal they're Right. saying that like many companies don't have that vision to have data scientists no many companies would say that we do not want to connect organizations but we still want data scientists to work and that's very wrong in some sense for a data scientist as well so with that aspect if you'll see when someone is starting off with data science he has to know first let's have a target company and like we want to have in an organizational driven like the where data driven organizations are there we want to end up in companies where like data analysts data visualization storyteller experts would do it's the same question like people from CS would relate to we want to go into hardware or software Right. right Right. Right. hardware jobs are few they are paying immensely. Right. Software jobs are immense. But The, will the pay modestly. pay gets moderate or low, whatever be Right. the case. Same here. If you have to make a decision, you have to be a very hardcore data scientist. Or you want to be on the lighter end data analyst and storyteller or visualization experts. If you are going into that route, then your salary would not be that much. And in data science, the rigor is immense. So you have to know statistics, you have to know a bit of mathematics, then coding also, bit of coding also. Though Amazon and like the SageMaker, they're trying to do away with it. But in the long term, you can't do away with coding. Hmm. Because what's happening is a data analyst and these would tell you the what of the problem. Hmm. You're Right. discovering what the problem is. Yeah. So like if you're saying my sales is going down that's the problem but what's beneath that problem so you're looking at why what is the problem तो सवाल के but पीछे like का it सवाल ये tries था. to tell you why the problem is occurring but still when we think on behavioral issues as a data scientist you have to be like behaviorally active as well because Okay. why are also assumptions Right. Right. Right.
सर एक चीज मैं मतलब बहुत ब्रीफ में पूछूंगा ये चीज आपसे कि अभी हम लोग बहुत बूम देख रहे हैं डेटा साइंस का एंड एआई का. हाउ डू यू सी इट इन फ्यूचर इफ यू टॉक अबाउट 5 to 10 years अहेड ऑफ दिस डेट? तो अभी ऑलरेडी इतना कंपनीज यूज कर रही हैं, बट अब आगे क्या, मतलब कैसे वो बिजनेसेस को इम्पैक्ट करेगा, कैसे वो जॉब मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है? अभी तो बूम है, कोविड पे बूम रह गई एंड लाइक एआई इज ग्रोइंग एट अ पेस. हम्म. एंड एज आई टोल्ड पहले कि 10 साल तो रहना है. जी जी. 10 साल ओके. के बाद एक चीज देखते हैं कहाँ प्लेटू होता है, बट देन ऑल्सो टेक्नोलॉजीज भी बढ़ेंगी. ओके. हम्म. Like simultaneously work is going on, and like I'll tell you, one of my colleagues at triple IIT Allahabad is working हम्म. on brain mapping of stock markets. So like what is Great. like you'll make brochures ना, this like angel broking zero था, ये सब brochures बनाते हैं ना कि ये stock बढ़ रहा है, ये stock घट रहा है, like हम्म. day mutual fund brochure बनाते हैं, and then they'll provide it on a tablet to a person. They'll MRI कि कौन सा, there's a PT MRI going on कि कौन सा ब्रेन लोब एक्टिवेट हो रहा है. तो Oh, we are trying to think कि कौन से कलर पैटर्न्स ले रहे हैं हम, कौन से हम्म. फॉन्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, कौन सी लैंग्वेज अट्रैक्ट करती है, दैट काइंड. तो स्टडी तो चलती रहेगी, right. हम्म. Such detailed नॉर्मल analysis. स्टडीज चलती रहेंगी, और लाइक ऑर्गेनाइजेशंस यूज भी करेंगी. ओके. Right. द आइडिया इज कि इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी आगे आती हैं और हम्म. कितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंडिया में बनती, इफ वी आर लुकिंग जॉब्स इन इंडिया. हम्म. Right. राइट. पोस्ट कोविड आई सी की थोड़ी सी जैसे इकोनॉमिक स्लम्प है एंड गवर्नमेंट हैज रिलीज पैकेजेस, स्टार्टअप्स निकलेंगे एंड दे विल ट्राई टू हैव मोर एंड मोर लाइक 20th or like there are many unicorns this year. It was not ओके. expected, Right. and all based on AI. Like majority of the unicorns were based on AI. हम्म. So that would happen, and like jobs would come. There's no, but like then the idea is India is mostly dependent from the GDP perspective as well, हम्म. mostly Right. dependent on the service scape industries. राइट But राइट. like एग्री. for AI and ML to boom, or like data science as a field to boom in India, product based companies की जरूरत Right. ओके. So, sir, uh, so the last question before we wrap up this podcast. Now, है. this question I think is gonna be interesting because this is on trend. So we see, sir, कि market में हर बार कभी ना कभी एक टेक्नोलॉजी का अचानक से वो आता है, बूम आता है, एंड उसका फिर 4-5 साल में वो फट जाता है बबल, right? So, is this data science field one such bubble which is soon going to burst, or is it a लंबे रेस की घोड़ा है ये ऐसा कुछ? See, not I'll see say every time we are investing in bubbles only. Being from finance Okay. background, तो हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स वहीं होते हैं जहाँ बबल्स होते हैं. कि Right. कुछ अगर एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है तो वहीं पर लोग इन्वेस्ट करेंगे. नॉर्मल रिटर्न आज मैं आपसे कहूँ कि सेविंग्स बैंक में कर दो तो नहीं करोगे. पीपल आर गोइंग इनटू स्टॉक मार्केट. 2% इंटरेस्ट पे कौन काम कर रहा है. राइट राइट. तो बबल्स तो हैं, बट But एज अ स्ट्रेच अगर मैं इसको देखूं डेटा साइंस को, तो इट्स अ सस्टेनेबल बबल इन अ सेंस. बस्ट होगा, बट लाइक वो बस्ट नहीं होगा जैसे सब प्राइम क्राइसिस, मैक्सिकन क्राइसिस, ये वाले right, बस्ट नहीं मिलेंगे. हम्म. इट विल right. प्लेटू एट अ स्टेज. No, जैसे जावा है, why? जावा वाज नॉट अ बबल. Right. So I'm just asking it because see, the last scam that took place in India was 1992, Harshit Mehta scam. So नहीं I'm just इतना बड़ा नहीं. तो ये तो उतना बड़ा scam तो नहीं है. नहीं, इतना बड़ा स्कैम तो नहीं है. दो डेटा साइंस में हुए बहुत बड़े बड़े स्कैम है. Okay. यूएस में तो बहुत बड़े बड़े हुए, थिरानोज और वो सब जो है ना एंटी कैंसर वाले. इफ यू सी डॉक्यूमेंट्रीज यू विल गेट टू नो. Right. हम्म. Like they were like बहुत पहले like 80s और 90s, like when data scientists came up ना, तो people said like data science से कैंसर क्योर हो गया और ये तो वो सब. तो है, but like इतने बड़े नहीं है, but हाँ still Okay. India is a very vigilant country Hmm. जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है. मतलब I see Right. no bad investments in India. That is why you see कि ग्लोबल जो एंजल इन्वेस्टर्स का मूवमेंट इंडिया पे रहता है. क्योंकि मतलब जो Right. स्कैम्स हो रहे हैं वो पब्लिक एरा में हो रहे हैं, बट लाइक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स इतने नहीं होते. चिट फंड विट फंड छोड़ देते हैं. लाइक हाँ. व्हेन एंजल फंड इन्वेस्टर्स के जो फ्रॉड्स होते हैं ना, जैसे एनरॉन है
Yeah. जो पेट्रोलियम के जैसे आपके एमजीएस, वो सॉफ्ट कंपनी एक थी पेट्रोलियम की, उसके ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज वेरी इंटेलिजेंस। उसका एक रीजन भी है कि जो एमसीए का फ्रेमवर्क है, एमसीए और सेबी का फ्रेमवर्क है, दैट्स वेरी स्ट्रिंजेंट। तो इंडियन Right. गवर्नमेंट को यहाँ तो कूडोज में दूंगा कि इतना इन लोगों ने फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग कर रखा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे मतलब उस एंड Right. पे फ्रॉड करना कि आप कोई बता दो कि मैंने ये प्रोडक्ट कर लिया और ये प्रोडक्ट हुई ना, ये बहुत Hmm. मुश्किल है। उसके बेस पे फंडिंग लाना मुश्किल राइट Right. राइट राइट। Right. है। चलो। वैसा बबल नहीं, बबल इज, हाँ मतलब ये हो सकता है कि 10 years पे जो स्टार्ट है वो खत्म हो जाए। लाइक लाइक Yeah. यू डोंट, जिसको एंटर करना है उसके लिए मैं कहता हूँ कि लाइक यहाँ से 5 years इज अ गुड टाइम टू एंटर। Right. Then we could see, but like from, if I see from today, like अगर 5 years बाद आप एंटर कर रहे हो, तो Then you will be दैट्स late. नॉट पॉइंट टू एंटर, क्योंकि हो सकता है जिस हेड स्टार्ट के लिए आप एंटर कर रहे हो वो ना मिले। वो चला जाए. Right. राइट। Right. चलो, हाँ. वैसे मैं ये बोलूंगा, ये दोनों चीजें सुन के बहुत खुशी हुई क्योंकि बबल नहीं है, हम किसी स्कैम में नहीं है, और अभी 5 साल तो एटलीस्ट काफी ल्यूक्रेटिव रहने वाला है ये। स्कैम में नहीं तो वैसे भी देख सकते हो, जिसको जो काम कर रहे हो उसको आप खुद ही सोचो आपको स्कैम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये delivering something The to whole someone, point that of is me okay. calling this, yeah, right, राइट। The idea is to deliver value ना। तो right, see, problem is companies are taking step, so अब ये भी हो रहा है ना कि many companies are taking a step back from analytics। बहुत डीप एनालिटिक्स चली गई, उसके बाद वो पीछे आ गई कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। रीजन इज द right. प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस Hmm. इज लाइक Hmm. पेनफुली स्लो। हम्म। मतलब आइडिया क्या है, जब भी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लॉन्च करती है कि आज से मेरा डेटा साइंस विंग शुरू हो गया, नो आइडिया है कि बजवर्ड से नुकसान क्या होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि आइडिया क्या होता है कि आज मैंने शुरू किया, 2 साल बाद आई एम गोइंग टू बी मिलियनियर, नॉट हैपेंस। Yeah, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है डेटा टू मनी कन्वर्जन जो है। डेटा इज द न्यू right. फ्यूल, बट वो माइनिंग से लेके उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत हाई है। राइट राइट। तो वो Right. वो लोग वो जब फ्यूल से कंपेयर कर लेते हैं तो कहते हैं यार पेट्रोल इतना तेज बिक जाता है, डेटा नहीं बिकता। Data नहीं बिकता. मॉनेटाइजेशन ऑफ डेटा इज इशू। राइट Right. राइट। थोड़ा पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लाइक फेसबुक showed a lot of patience and it's reaping its benefits. Amazon showed, नेटफ्लिक्स ने तो कितने हैकाथन्स करा दिए Right. बिफोर गेटिंग द नियर परफेक्ट एल्गोरिथम दैट इट्स वर्किंग विद Hmm. नाउ। मैं तो बहुत हैकाथन्स करा दिए, तो उनका आइडिया ही ये था कि मतलब वो दे वर रेडी टू लाइक सिट एट अ पेस। Invest into it. हाँ, जैसे अमेजोन का देखो तो 1994 एंड लाइक इट बिकेम कैश फ्लो पॉजिटिव इन 2004। Right. गुड 10 years। अब Hmm. ऐसी कोई फील्ड नहीं है अमेजोन नहीं Amazon नहीं है. Right. राइट। है, सॉन्ग्स में भी आ गए हैं, ई बुक्स हर में भी जगह. है, हर सब है. हर जगह जगह, हर मतलब हर जगह। डोमेन में उनका एक एक ऐप है उनके पास। अब तो अपनी दुकान है. हाँ, उन्होंने अपना बना लिया ना, तो मतलब हाँ. इट्स टाइम जहां जो प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा रश कर गए, जैसे Hmm. बहुत प्राइम एग्जांपल स्नैपडील का, स्नैपडील रश्ड इनटू एनालिटिक्स। Hmm. थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहे हैं वहां। Right. राइट। तो मैं जस्ट अपनी फटाफट से लाइव चैट और चेक कर लेता हूँ, इफ वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स, एंड सीम्स लाइक दे डू नॉट। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू रियली थैंक ज्ञानेश टू कम ओवर टू द पॉडकास्ट एंड एनलाइटन अस विद ऑल हिज थॉट्स। थैंक यू सो मच ज्ञानेश सर। थैंक यू। एंड थैंक यू आशीष ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग मी एज को होस्ट। बहुत बढ़िया काम करते हो आप। थैंक्स वैभव. जो एक एक चीज मैं इस पॉडकास्ट से लेके जाऊंगा वो ये कि वी आर नॉट इन अ स्कैम. यस। दिस इज हियर टू स्टे. या. Yeah, right. And with this, I would also like to request all our viewers to comment in the section. If they have any questions, do comment it. We'll try to answer to all those questions. And ये ज़रूरी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। एंड इसी यार के साथ भूलना नहीं, प्लीज डोंट फॉरगेट. ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना सब्सक्राइब बटन, मेरे को नहीं पता आप क्या करोगे बट डिस्ट्रॉय इट. और लाइक बटन का तो कान मरोड़ दो, उसको नीला कर दो ना. लाइक बटन का कान मरोड़ के नीला कर देना जैसे आपका बचपन में स्कूल में होता था. सो जस्ट डू इट.
एंड लेट अस नो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर ज्ञानेश सर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, and also let us know what you would like to hear on the next podcast. So this is me and Vaibhav signing off from this podcast. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.